everyone, welcome back to my channel Live Life Gorgeous. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Snigdha and you're watching Live Life Gorgeous. Don't forget to subscribe if you're new, and those who are already part of my YouTube family, our YouTube family, you just need to hit the like button because it's gonna be likable and share it ahead with your friends and family because today is gonna be a swatches video. So let's just get started with our swatches. So today's video is, it was never planned video जो आज की वीडियो है, because as you can see all that, ये मैं just एक reels बना रही थी and I was just doing my stuff and फिर मैंने मेरे दिमाग में क्लिक किया कि let's just make a swatches video also, because जो मैं swatches है वो shorts पे बना रही थी, YouTube shorts के लिए बना रही थी. फिर मैंने सोचा let's just give it a whole review of René. So I have this 10 lip shade set and मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी because 10 swatches एक दिन में I don't know, let's just check that out. अगर इसका टाइमिंग ज़्यादा नहीं गया तो मैं एक ही वीडियो बनाऊँगी and it's gonna be totally swatches video. As we know, The René Stay Forever Matte Liquid Lip Shades ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं. इससे लिप्स ड्राई बिल्कुल फील नहीं करते, प्लस ये लाइट वेट है और एंड मेक श्योर आप एक बार में ही स्वॉच कर रहे हो, लाइक एक बार में ही स्वाइप कर रहे हो. सेकेंड टाइम अगर करना है तो यू कैन डू इट, बट इसका एक ट्रिक होता है कि नीचे हल्का सा जस्ट आप बाम ऐड कर लो अपना, ठीक है. लेट इट ड्राई फॉर 1-2 मिनट एंड देन ये अप्लाई करो. So yeah, or sometimes I do what is mixing the lip shades. तो मैं नीचे मैट, नायका मैट हो गई या किसी की भी मैट लगाकर वेरी न्यूड शेड और फिर उसके ऊपर डार्क हल्का सा टिप लगा के उसे मिक्स एंड मैच करती हूँ. बट आज का जो वीडियो है वो टोटली इनके स्वॉचेस होने वाले हैं. हाउ डज इट लुक ऑन माई स्किन. बाकी दोज नो कि इनका जो कलर है हर स्किन टोन के साथ, इनके शेड्स हैं वो हर टोन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल वार्म टोन होती है कईयों की, न्यूट्रल टोन होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दिस से स्किन कलर. मैं स्किन कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वार्म टोन, न्यूट्रल टोन और कूल टोन जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो लिप शेड्स है वो चेंज होते हैं डेफिनेटली. बट मैं इसे अपने शेड के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ. दीज आर द लिप शेड्स, सो लेट्स जस्ट स्वॉच इट ऑल. सो फर्स्ट इज दिस Serene, ये जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है. So this is the Serene, name is Serene. Amazing color, see, amazing color. This looks good, yeah. This is the next shade, which is also in pink tone. So इसमें हर टोन के दो shades हैं. So this is Magic. This is Magic and I love it. This actually, I hope it is visible, and this is how I remove it with the aloe vera gel, because इसमें ज़्यादा chemicals और cleanser I don't have. मेरे पास Lakme cleanser था, वो finish हो गया, so I am using this aloe vera with this cotton pad. So yeah, it is not easy to remove, but if you will do it, पहले aloe vera से कर लो and then okay. The brush is so easy to apply. Actually, it is really easy to apply, and this shade is Bliss. This is really the texture is very creamy when you apply. The texture is very creamy, and instantly when you apply it, it dries out and gives you this beautiful coverage. I just love it, really. Yeah, so this is the Bliss. This is in a shade red. So it also have, okay, so it got 3 shades in this red. So we got 3 shades. This is the Bliss one, and let's just check that out. Another one. This really stays. ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, बट मैं एकदम से अप्लाई करके एंड आई एम जस्ट रिमूविंग इट, सो इट इज़ बिट हार्ड फॉर मी टू रिमूव. Here you go, finally it removed. मैं बाद में कैस्टर ऑयल ज़रूर अप्लाई करने वाली हूँ. माई गॉड, या इट कैन रिमूव विद द ऑयल ऑल्सो. मैं ज़्यादा केमिकल्स में बिलीव नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं ये कैस्टर ऑयल वगैरह यही सब रखती हूँ. हाँ, लैक्मे का मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लेंजर, मिल्क क्लेंजर जो है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ. अदरवाइज आई डोंट थिंक मैंने और कोई यूज़ भी किया है. सो या, डू इट. दिस इज रेयर. I've never applied the red shade onto me. This is the first time. आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो. I've never applied this red shade on me. Oh,
Wow, this is really, brushes are so good. And I really don't use the lip liners as this goes really trendy. बट मैं बताऊँ, मैं अपनी बुआ मामा छोटे होते मैं इन्हें देखती आनी है बहुत पेंसिल यूज़ करती थी, फिर उसके अंदर लिप्स लिप शेड्स लगाती थी, तो वही एक दोबारा से यार रिपीट हो रहा है. सो मैं नहीं यूज़ करती पेंसिल्स एंड ऑल. नो, नेवर. Okay, so this is the this is the rare shade, and this is actually rare and I love it. मैंने कभी रेड शेड अपने पे यूज़ नहीं किया, but I think I should do it. What do you think? Yeah, so it is removed. Most of you think of कि ये मैं कैसे it is really difficult. मैं स्वॉचेस ज़्यादा करती नहीं हूँ, आपने देखा हो तो मुझे बहुत ऐसे अनईजी सा लगता है, बार बार रिमूव करो ये करो. तो मैं ये मेकअप है ये बार बार रीअप्लाई कर रही हूँ सो दैट इट वॉन्ट लुक बिकॉज जब मैं रिमूव कर रही हूँ तो मेकअप भी रिमूव हो रहा है साइड से. सो मैं बार बार इसे टचअप दे रही हूँ. सो या move to our another one. This is the Muse. This is the Muse. See? Oh my god. This is the okay. So ये blood red color जैसा लग रहा है. Let's see how it's gonna be. Oh my god. Okay. So frankly speaking मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा because it gives you orangish also texture. Yeah, so it is more like orangish. मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगा है. So you see, but just it is the rare is beautiful. Rare, but the rare is beautiful. But this is also cool. This gives you the orangish one. I'm sorry if I said ये red के जैसा है. No, this gives you more orangish. Yeah. So let's just check that out. Another one. Removed. Oh my god. Okay, so the next is this very nude shade. This is in a shade called Enigma. Let's just check that out. Oh my god, this is cute. This is just like my lips. This matches my lips actually. This is nice. You have to be very quick with these Rene Stay Forever Matte Liquid Lipstick. Sorry, lipstick. Lip shade and lipstick. Okay, so lip shades. Because ये बहुत easily dry हो जाती है. Like very quickly it get dry. It doesn't give you a time. This is very nude. I can say the blush pink shade, but we used to call it as like the Barbie shade. See? Okay, wait. This is like this. This is the Barbie pink color. I used to have it in my school days. So वो Barbie color sketch तब पता नहीं था, pastel बोलते हैं इसे, pastel shades. वो तब पता नहीं था. तो मैं Barbie pink, Barbie blue, Barbie purple. So मैं वैसे बोलती हूँ. This is like that. Amazing. Okay, so on to the next. Okay, so this is also a pink shade, pinky pink. This is Aurora. So you can see this is a beautiful pink. Let's just check that out. Oh wow. This looks so cute. यार ये shades तो उन्होंने amazing. See? How you like it? I love it. I just love it. यार ये shades बहुत प्यारे रहने के. Though my lips are swollen now, it's hard. बार बार उसे remove करो, वो भी matte lip shades को, like matte. Crazy. I feel like so swollen lips. फिर उसके बाद touch up दो. Oh my god, it's so much of work, but it's totally worth it because the shades are amazing. The shades are amazing, and I'm loving every shade on me. Seriously. Except for the one shade which I have, I guess Muse. Yeah, Muse. This was okay. I didn't like that much, but all in all, I love every shade. अभी तक तो. Let's just check that out. The next one, अगली जो category है, it's gonna be the peach one and the brown. So let's just get into that. So I have just applied this Oasis. I guess this is Oasis. See?
And this looks like this. Amazing shade. This is really amazing. This literally blend with my skin. Amazing. I like it. Yeah. So this is the next shade called Mirage. And this is much lighter than the earlier one. But this is also a coffee shade. There was the darker one, the dark side of the coffee shade, but this is the lighter side. See, this is how it is. I hope it is visible. I mean, like, is it? Okay, it is now. Yeah. So this is the Mirage. I can't even tell you. It becomes so sticky because of this aloe vera gel. Oh god, this becomes so sticky. I really need to get it done. बस एक ही shade रह गया है, which is Eclipse. This is the last shade. Then my lips will be rest in peace. No. So yeah, I'll nourish them. Yeah. So okay, let's just check that out. This Eclipse. So this is how it is. This is the I don't know, I'm just in between. और मैं ये लास्ट में टचअप करना भूल गई, तो प्लीज़ डोंट कमेंट मी ऑन दैट. So this is what it is. Yeah. So finally, all these shades I have tried. All these shades I've tried in front of you. Now you saw the texture, you saw the shade and everything. So I've tried all 10 shades in front of you. I hope you liked it. Now my lips are in coma mode. Oh no. I don't know what to say, but मैं जाती हूँ जल्दी से remove करती हूँ and nourish them. Oh my god, this really need a nourishment now. So yeah, so I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe. And if you're new to my channel, you just need to subscribe to my channel and share it with your family and friends. See you with the next vlog. Till then, take care. Bye bye everyone.